सदगुरु होम्यो हॉस्पिटल की ओर से मैं डॉक्टर सहदेव वानखेड़े आप सभी का डेली बुक रीडिंग वर्कशॉप द बुक पार्ट 1 थ्योरी ऑफ सेपरेशन डॉक्टर प्रफुल्ल विजय का इस वर्कशॉप में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। तो आज का हम सेशन लेंगे केस नंबर 4, जो मास्टर चिन्मय 4.5 years ओल्ड इस बच्चे की केस है जो वायलेंट कफ। तो हम आज ये केस देखेंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द केस नंबर 4, case of violent cough. Violent cough since the age of 1.5 years, that is for last 3 years, it is aggravated at 4 a.m. and sleep during. Waking him from sleep with redness of face and suffocated feeling. The child woke up due to sheer loudness of cough. उसके ही कफ का इतना लाउड नॉइस होता था जिसकी वजह से पेशेंट की नींद खुल जाती थी। स्टार्टेड आफ्टर हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, दैट कफ वाज स्टार्टेड आफ्टर द वैक्सीनेशन। इनिशियली द कफ वाज periodic, aggravate every month end, yes, but after having treated with allopathy as well as homeopathy, it had got aggravated and become daily nocturnal cough. This spasmodic cough or CROUP was sometimes associated with sudden unexpected rise of temperature coming on at night. Appetite had reduced over the last 1 year and he had lost weight drastically. Another physical complaint which had started after the vaccination was loose motion with very offensive flatus and loss of appetite. Voice was hoarse or heavy. Nature of child. So यहाँ तक हमें क्या समझ में आया? That cough was aggravated at night. Very loud noise of that cough, appetite reduced, weight reduced, and the elements from vaccination. Nature of child: loves to play in mud and dirt. That child loves to play in mud, can do anything in mud, likes to roll and crawl and play in muddy water when very happy, or even rolls obstinately in muddy floor when he lost his temper. Very strange symptom. Throws temper tantrum and rolls on the floor. Whenever he sits on a seat, he involuntarily falls down onto the floor. Floor से जरा ज्यादा ही प्यार इस बच्चे को था. He is very shabby and dirty. Any good clothes he wears, after a few minutes you will find the clothes dirty. Yes. So perverted and destructive syphilitic mentality. Perverted and destructive syphilitic mentality. Anger was very violent and so was his love. Anger was violent
उसी तरह से उसका प्यार भी वायलेंट. Besides rolling on floor, his anger would make him kill insects ruthlessly, or tear or throws away book and valuable things. Even his love was violent. He would embarrass his mother too violently that she would be almost suffocated. मतलब कैसा प्यार वो करता हूँ. अगर मम्मी को वो पप्पी लेता है, किस करता है, तो मम्मी का गला दबा देगा. Yes, so this is violent love. He demonstrated his love by pinching her cheeks and hurting her. Anger was precipitate suddenly. Anything he suggested which was contradicted, like wanting to watch a particular TV channel, he would straight away get up and throw anything like a vase on that person's face, or give a box on the face, not bothering to see who the person was. Loves to watch violent action movies. So all the symptoms, all the totality of symptoms is strange, violent, syphilitic. So extremely restless child. Could hardly sit in one place. Memory was very sharp. Sir, page number 103. Okay, sir. Yeah. And the parents said he picked up things very fast. So very destructive mind, perverted thoughts, very fast speed of that patient. Fearlessness was marked. He would jump from any height, swings, steps of ladder, never cautious about getting hurt. But once he was hurt, he will take care of that injury immediately by applying some ointments. Great love for animals. Extremely crazy about horses. He has one too. Of animals at home, he has forced his parents to keep a horse, dog, cat, ostrich, hens, rabbits, turtle, deer, a cow, and now wants them to keep a tiger. Very strange. Hobbies देखो किस टाइप की. All animals, even tiger भी नहीं छोड़, सब चाहिए घर पे. Very affectionate towards bigger animal and very cruel towards insects. He feeds all the animal by himself. He also taking care of that animals. Horses fascinate him. Even on sitting on a swing, used to gestures as if riding a horse. Yes, delusion, riding a horse. Egoistic. Sorry word does not exist in his dictionary. Very egoistic. Esteem holder. Self-esteem. Hits with head. Very moody. He will listen to parents only when his mood allow, usually does not opposite of what he is told. Very moody. Habit of putting collar in mouth. Braggart and liar. So chewing of collar. The more he is prized, better is his
output. Yes, both acha. Things he is interested in, he does fast, and what he is not interested, he will do it slowly. Not much interested in music, but wants music on continuously in the car. तो उसे अच्छा बोलना चाहिए, तब वो आउटपुट अच्छा देगा. Sometimes tells mother to sing with room closed and dances alone for hours. रूम में खुद को बंद करके डांस करेगा, म्यूजिक सुनेगा. Will never dance in front of others at all. Why? He does not want people to criticize him. Yes. तो लोगों के सामने इसलिए नहीं करता है कि उसे किसी ने क्रिटिसाइज किया हुआ पसंद नहीं. If anybody criticized him or said bad about him, he would be so hurt that he would roll on the floor, kicking, whipping, striking, and screaming. His sensitivity was marked not only towards himself but also towards his pets. Very sensitive about animals, pets. With all this destructive anger and sensitivity, he is a very restless, high-strung, startled easily on being called suddenly or due to a loud noise. He was also kind. He was also kind-hearted, as mother put it. He could not bear to hear about cruelty to animals, or could not see a man or animal dying even in movies. So, humans के लिए cruelty, harshness, roughness, destructiveness, और animals के लिए इतना kind, love. Personal history. Appetite depends upon moods. He might feel hungry suddenly or not eat at all for the day. Very moody. Thirst on higher side. Curds, soups, sweets, chocolate, ice creams like the most. Loves the most. Bowels not now constipation. Sleep less but refreshing. Wakes up fresh. Drinks milk. So this is the picture of that patient, physical generals. Now origin, duration and progression of the disease. After the first vaccine at the age of 1 year, the child developed mild rash on face treated with local ointment. Thereafter, mild cough started. Second vaccination of hepatitis was given, which was followed by loose motion. So first vaccination के बाद rash, second vaccination के बाद loose motion. देखो मतलब that rash was suppressed and now goes into the second layer. Loose motion were treated with some local homeopathic medicines and voice started becoming hoarse off and on. देखो. So second layer say that toxins get suppressed, and again the symptoms of third layer hoarseness was started. Cartilage of throat, larynx, pharynx was affected. This was followed by severe violent spasmodic cough, which was first periodic and later after treatment become a daily affair. So in the above case, disease initiated or precipitated by vaccine, that is the first layer,
in the form of disturbed immunity express itself and travel as inflammation, psora, from skin to mucous membrane of pharynx trachea, causing cough. Further, GIT in the intestine, the inflammation gave soreness and sensitive, that is soric manifestation, to give rise to diarrhea. Second layer endoderm. From here, the inflammatory process, psora, traveled to third layer connective tissue and affected the laryngeal cartilage. His hoarseness would come and go since the laryngeal cords were now and then irritated and inflamed by whatever irritant like cold air, cold water, dust, pollution, etc. That means the sensitivity of vocal cord or the laryngeal cords was increased. This was a soric state. Sensitivity increased, that is the soric state of hoarseness. As he is known, every irritation is followed by induration. Yes. Irritation, inflammation, followed by induration or thickening. This is psora to psychosis. When this thickening or induration occurs, the inflammatory stage is over. Yes. Thickening and induration जैसे start हो जाता है, inflammatory stage complete stop हो जाते हैं. That means soric stage completely stops, psora converted into psychosis. So psora stage is over and growth stage start, that is the psychosis stage. Thus, psora or inflammation manifestation in a particular cell, tissue or organs, here the laryngeal cartilage or vocal cords, the vocal cords after having worn the person often by dynamic symptom, that is changeable, reversible symptoms, now decide to settle permanently in that organ in the form of growth or induration. Psora converted into the chronic psychosis. So which we call as psychosis. This is a dangerous stage where the individual's constitution starts showing various signs. Yes, that is the increase. जैसे psychosis start होता है तो उसके signs देखना शुरू होगा. तो signs क्या होते हैं? तो हम पेशेंट को देखते बराबर पहचान सकते हैं कि दिस इज साइकोसिस, एक्सेस साइकोसिस, दैट इज द इंक्रीज वेट, rounding of previously sharp features. For example, nose, eyes, counters of face becomes round, chubby. Dullness, slowness, inactivity, deceitfulness, slyness, hiding tendency in mentals. Vanity, wants appreciation is psychosis. So start manifesting in behavior and attitude also. So performance in school is affected. Any exercise become laborious and a young active boy may also develop a dyspnea, a preliminary hypertensive symptom. देखो, before third layer से वो fourth layer में जाएगा and start hypertension. The stage is traveled from psora to psychosis. In the above case, the voice become permanently hoarse due to induration or notes. After third vaccination, travel from psychosis to syphilis. The hoarseness had now become permanent. It was treated with different medicines with no avail. Now the inflammation on the cartilage was psychotic inflammation. The advent of violent, out of proportion
Devastating coughing bouts was an indication that the disease was threatening to progress from psychosis to syphilis. Syphilis is destruction, perversion, abnormal distortion. Ordinary bronchitis or soric bronchitis does not give violent cough which affects the whole economy. Periodical monthly cough was pre-syphilitic stage. Monthly, periodical is syphilis. So where disease was threatening to travel from psychosis to syphilis, the more the cough was suppressed with allopathy and partially indicated homeopathic remedies, the more vigorously it boomerang. Yes, that is this Newton's second law of action. Every action has an equal and opposite reaction. Once the syphilitic cough set in, that is coming on only at night, a violence-filled coughing bout giving rise to suffocative spasm, the child started on other destructive trait like loss of weight. Yes. जैसे ही वो syphilitic में गया, loss of weight start. Nature become unduly harsh, obstinate, and cruel. So this was the case. कैसे सपरेशन हुआ, एनालिसिस सर ने बहुत अच्छा किया है यहाँ पे, जिसे सर ने नाम दिया है कि ओरिजिन, ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेशन. तो किस टाइप से ओरिजिन था डिजीज का, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस वजह से स्टार्ट हुआ, देन प्रोग्रेस किस तरह से हुआ, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस ऑफ डिजीज स्टार्ट फ्रॉम सोरा टू साइकोसिस टू सिफिलिस, फ्रॉम फर्स्ट लेयर टू second layer to third layer, and after that fourth layer hypertension. So this was case very nicely sir has written here. Now the analysis of this case. At the onset, so many remedies come to our mind, like कौन से medicines यहाँ आपके माइंड में आ रहे हैं. That is the destructive, restless, dancing child. तो आप लोग क्या क्या मेडिसिन सोच रहे हैं इस केस में, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए. कौन से मेडिसिन यहाँ आ सकते हैं? मर्कसॉल, टेरेंटुला, स्ट्रेमोनियम, और कौन से मेडिसिन है? So analysis of this case. At the onset, so many remedies come to our mind. The destructiveness, restlessness, dancing, eating indigestible things like collar of the shirt, tarantula. Yes. Then the revolting, angry, restless, indifference to reprimand, point to mercury. The love for animal with hatred, destructiveness and restless may point to medorinum. If one wants to come, one can easily fit in any remedy to prove and point, since most of the remedies have large number of symptoms, sometimes as strong symptoms like love for horse is stretched so far that credibility breaks. Yes, there are cock and bull stories framed to arrive at conclusion, which have started making homeopathy a part of Aesop's fables. This has been disadding youngsters, demoralizing them and convincing them that
homeopathic practice is a real difficult one and is monopoly of imaginative and hi-fi thinkers. Yes. तो इस तरह से अगर हम सोचते हैं कि दो चार रूब्रिक्स लेके जो दिख रहे हैं, जो पेशेंट ने यहाँ प्रेजेंट किए, उस पर से भी अगर हम सोचते हैं पूरे टोटलिटी पर से, तो दो चार रेमेडीज सामने आती हैं। फिर हर कोई अपने अपने तरीके से कि इसमें ये ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, ये ज्यादा स्ट्रांग, ऐसा करके अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो टेरेंटुला, मर्क्सॉल, मेडोरिनम ये रेमेडीज दे देंगे। बट इतना इजी नहीं है। होम्योपैथी इज नॉट अ सिंपल। ने इजीली ऐसे केसेस में जो क्रॉनिक केस बन चुकी है, क्रॉनिक केस होने के बाद भी जो मेंटल लेवल पे सिपिलिटिक में एंटर हुई है, तो इस तरह के सिपिलिटिक केसेस में किस तरह का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कैसे प्रिस्क्राइब करना चाहिए, तो सर ने बहुत ही अच्छा एनालिसिस यहाँ दिया है। So on the contrary, homeopathic practice is easy. All that you have to is to apply all your knowledge of Madra Medica, Mahism and use of repertory to guide you. All that one has to know is differentiation between remedies and what symptoms to give importance to in order to reach the minimum. As shown above, importance given to different set of symptoms will point out to different remedies. For example, tarantula, mercury, medorinum, etc. Which of the above is real minimum? Any one of the above remedies are going to work partially. Most of such partially indicated remedies given by homeopath show initial improvement in the symptoms and are projected and presented as fantastic cure by homeopaths all over the world. No one shows cure occurring according to Herring's law. The patient who come with symptoms of cough or nervousness, agitated mind as XYZ symptoms are shown as the patient felt better. Therefore, the remedies was a minimum. It is more like a child story ending in and they lived happily thereafter. Yes. तो इतना easy नहीं है प्रिस्क्रिप्शन करना कि कफ है, वायलेंट कफ है प्लस डिस्ट्रक्टिवनेस है तो मर्क्यूरी देख, है ना, कॉलर ईटिंग है या फिर अनडाइजेस्टिबल थिंग्स है ईटिंग फॉर इज टेरेंटुला, नो। क्रुएल्टी है मेडोरिनम, नो। सो अकॉर्डिंग टू सर, अगर उसे जीसीएस देना है, परफेक्ट सिमिलिमम देना है, तो एनालिसिस किस तरह से होना चाहिए, कौन से सिम्टम्स ये पैथोलॉजिकल है, डिजीज सिम्टम है कि उसका जेनेटिक ट्रेट है, उसका नेचुरल ट्रेट है, इनहेरेंट स्टेट है, कौन सा सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, ये पहचानते आना चाहिए कि किस सिम्टम्स को इंपॉर्टेंट देना है और किस सिम्टम को नहीं। So no symptoms or disease can disappear at all of a sudden. Yes, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर सिम्टम्स जाता है तो उसे कहीं ना कहीं से निकलना है, तो वो कहाँ से निकला है, ऐसे ही थिन एयर में वो गायब नहीं हो जाएगा। So all of sudden into a thin air. Everything occurring in the world has cause. Yes. जो भी होता है उसके लिए कारण होना जरूरी है, कॉज होना जरूरी है। सो एवरीथिंग ऑकरिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ प्रीकर्सर एंड फॉलोअर। उसे प्रीकर्सर भी होता है एंड फॉलोअर भी होता है। वो जा रहा है मतलब दिखेगा कि ये जा रहा है, लेकिन वो उसे कहीं ना कहीं से रिअपियर भी होना है। तो वो कहाँ से हुआ,
ये पता लगाना है ना। इसीलिए कहा है कि एवरी वर्ड हैज अ प्रीकर्सर एंड फॉलोअर. So everything occurring in this world is a result of force or energy. आप कुछ भी करो उसे फोर्स भी लगेगा. That is the energy. So as per the first law of thermodynamics and biogenetics, the sum total of energy is constant. Energy can never be created nor it destroyed. It can only be transferred from one form to another. Thus, the effect shown on the shown or the manifested on any of our system like GIT or respiratory tract has to be due to cause inside the body, which is in the form of energy. The effect can change location from less important to more important. System in the body in case of suppression or progression of disease, or vice versa in case of cure. Yes. तो ये भी विजन होना बहुत जरूरी है कि जो गया, दैट इज द ट्रांसफर, वो कहीं ना कहीं अपियर होना ही चाहिए. फिर वो जो लेयर पे था उस लेयर से गया तो उससे लेस इंपॉर्टेंट में आए कि मोर इंपॉर्टेंट में. तो ये फॉलोअप्स में हमें इतना डिटेल्स में फॉलोअप्स लेने ही चाहिए, हर फॉलोअप्स लिख के रखना चाहिए. So in short, every homeopath has to look out for symptoms which shall be thrown by the organism, that is patient, as to assess whether it is in more important or less important system or layer, and then conclude whether the remedy is right or wrong. Yes. तो इससे ही पता चलेगा और फॉलोअप में ही पता चलता है कि मेडिसिन रॉन्ग है कि राइट है. वी आर ऑन राइट ट्रैक or wrong track, following the wrong track. Yes. So our gullible homeopath star of results are ready to take in any new fantasy as mode of prescribing with the patient going to dogs. Yes. कोई इसके तरफ अगर ध्यान नहीं देता है, इसे फॉलो नहीं करता है, तो पता ही नहीं चलेगा कि वो रॉन्ग कर रहा है कि राइट कर रहा है. स्पेशली न्यूली होम्योपैथ्स बिंदास्त मेडिसिन देते हैं. वन सिम्टम सुन के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, 4 मेडिसिन एट ए टाइम देंगे, रिपीटेशन कंटिन्यूली करेंगे. दिस इज रॉन्ग. क्योंकि इस सिस्टम में, इस टाइप ऑफ प्रिस्क्राइबिंग में समझ में नहीं आता है कि क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, कहाँ है, हम किस रूट से ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे. कितना कॉम्प्लिकेटेड करके रखते हैं हम केस. इसलिए न्यूली जो होम्योपैथ्स है, अगर इस टाइप की प्रैक्टिस होती है, मल्टीपल ड्रग्स, मल्टीपल रिपीटेशंस, they never get the result in big pathological cases. So worst of all results which shown are in the first 2 layers. Yes, only they give the temporary relief or the palliation in first and second layer. So ectoderm and the most stem are functional, which would have subsided even otherwise. A real homeopath is one who shows result in higher levels of suppression, like chronic diseases like diabetes, tuberculosis, tumors, cancers, terminal cases, etc. Either eliciting Hering's law or showing compensatory. तो जो लोग पूरी हिस्ट्री लेके, पूरा केस समझ के, अच्छी तरह से एनालिसिस करके जो रूब्रिक्स लेते हैं और मेडिसिन निकाल के प्रिस्क्राइब करते हैं, उन्हें ही एक तो कंप्लीट क्योर विद द हेरिंग्स लॉ फॉलो होगा, या फिर विदाउट हेरिंग्स लॉ कॉम्पेंसेटरी क्योर फॉलो होगा.
So in the above case, I had to select a simillimum which was psychosyphilitic, representing the child as a whole. Yes. So the miasm is psychosyphilitic. So we want the psychosyphilitic rubrics. So child as a whole had strong general going through him, and that was violent. The main through and through his genetic trait was violence. जो स्टार्टिंग से हम उसके हर सिम्टम में हम देख रहे थे वायलेंस. कप वाज वायलेंट, लव वाज वायलेंट, एग्रीवेशन वायलेंट, worseness of symptoms is violent. So all things, mental, general, and particulars are following the violence. That is the through and through. So Sir gives importance to violence. Yes, the anger was violent, the love was violent, the cup was violent. A second most peculiar characteristics which was strikes us is his attention towards floor. कुछ भी हुआ कि floor पे, lying on floor. So he rolls on floor when angry. He crawls on muddy floor. He slides from any seat on the floor. So second rubric, sir, was considered here is roll on the floor. So violence plus rolling on floor, and we get following drugs like cicuta, proteus, sulfur, and tarantula. These four drugs. So children who are violent and roll on the floor are above constitution. Now we wanted a constitution which is sensitive to public opinions, appearing in public about himself. Though the child looked dancing, though the child loved dancing, it would not dance in public. It is not that the child would just dance and fish for compliment, yes. And if not given proper compliment, would become sad. At the onset itself, he was afraid of any compliment in fear that he might be hurt. Hence, his dance in a closed room. That is the fear of compliment. For a destructive, angry, violent child, this small fear or opinion of others matters, which was very contradictory and peculiar. इतना courageous है, destructive child है, और वो इतने simple बात के लिए sensitive है, उस बात की उसे fear है. So taking fear of opinions of other as eliminating rubric, we are left with one remedy, that is proteus. So ये fear of opinions of others add करने के बाद only one remedy sir has got here, that is the proteus. Respectively proteus, अब proteus का remedy का सर ने यहाँ दिया है, पिक्चर यहाँ दिया है कि proteus it is a psychosyphilitic remedy. Proteus covers the suddenness. It is known as cyclone. Cyclone के जैसी remedy है. So Proteus covers restlessness, quarrelsomeness, offended easily, kill desire to, or destructiveness, and Proteus covers contradictory, like contradiction, intolerant. So this is the Proteus. So incidentally, it is the only remedy which has crawling, rolling on floor, anger during. Yes. So it would be dangerous to go from a small rubric towards simillimum. Yes. Because the other drugs which also have rolling on the floor like cicuta, sulfur, tarantula, calcrea, and opium, acetic acid, peonia, these are also covered the rolling on the floor. Would never be considered, and if the genetic, if the generals of violence
suddenness and sensitivity as above, then Proteus could never have worked. Yes. Proteus उसमें work नहीं करता था if that patient, that boy, never violent or suddenness, restlessness, etc. So thus it is the always better and safer to consider a genetic rubric through and through natural traits with a large number of remedies. और rubric भी कैसा होना चाहिए, बड़ा, जिसमें बहुत सारे remedies है. Filter them down with thermals or strong peculiar symptoms. Finally, use your materia medica knowledge to zero down the similima. So even this does not suffice. One has to retrospectively see whether the same remedy is getting confirmed. Other strong generals, physicals, mentals, and miasm in this. Why a genetic constitutional simillimum can be selected only genetic constitutional simillimum. Yes. So reverse the symptoms according to Herring law. Cure irreversible pathology. Cure cure chronic diseases like hypertension, diabetes. Reverse disease process from psychosis to SORA or syphilis to SORA. And all this with single dose, repeated infrequently. Yes. So this was the case. Proteus. It is a very rare remedy, but very good remedy. So after Proteus, the follow-up like as violent cough reduced, no spasm, appetite improved, the child more amiable to suggestions. Yes, rolling anger and anger attacks are reduced. So this is syphilitic to psychosis. Yes. The child more amiable is psychosis. Violent cough, very few bouts, aggravated around new moon. Yes. Subsided on its own, no sleep disturb, and appetite good, weight increase, hoarseness reduce, psychosis to SORA. That is the hoarseness reduce, weight increase. Yes, it is SORIC. Same as above. So never repeated the remedy, and after 2 months mild cough started. अब देखो cough में difference है, पहले violent था, now mild cough started, that is the SORIC sign. This cough, the mother said that much different from the previous one. Yes, इस टाइप का जो कफ अभी आया है, it is totally different. जो पहले था उससे totally different है. There was no violence. It was more on work, waking in the morning. This is sure. Was superficial voice. Morning, yes. It was superficial voice, normalized weight, increase marginally. Child is more active, less destructive, taking interest in studies, become diligent, considerably change, yes, does not dirty the cloth. Very good. Joska has become more concerned about his belongings. Yes, dirtiness, it is sorry good. So dirtiness gaya matlab now he is becoming free from SORA. Yes. So boils on the skin, rest general okay, and boils laser dried up generally off. That is SORA. So जो eruptions आए थे वो भी चले गए. So now this is the complete cure according to Herring's law. Yes. So this was the case of Proteus. Okay. Good remedy. So इस केस में क्या क्या समझ में आया? What you are getting from this case? Now unmute himself and you can ask question, you can share something about this case, you can
share what you have understand from this case, from this conversation. So फटाफट अनम्यूट करके आप फास्ट वन बाय वन शेयर कीजिए, या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल पार्ट था इस बुक का थ्योरी ऑफ सेपरेशन, ये फिनिश हो गया। केसेस सर ने जो यहाँ पे सेपरेशन की दिए थे वो फिनिश हुए। नाउ द प्रूफ ऑफ सिमिलिमम हम वो कर लेंगे। सिमिलिमम ये कैसे पहचानना कि ये परफेक्ट सिमिलिमम है, उसका प्रूफ में सर क्या देखते हैं कि किस तरह से प्रूफ उसमें आते हैं कि ये श्योरली द करेक्ट रेमेडी। तो ये हम कर लेंगे। ओके, सो नाउ अपने वीडियो ऑन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छी केस थी। सर आपने अभी ये केस बताई है तो ये कहाँ से बताई है, कौन से बुक्स में से बताई है? थ्योरी ऑफ सेपरेशन। अच्छा, बहुत ही एक्सलेंट केस है ये कि किस तरह से अगर माइंड में सिपिलिटिक चल रहा है तो उसका बॉडी पे भी किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। माइंड में अगर सिपिलिटिक माइजम स्टार्ट हुआ है तो बॉडी में उसे आना ही है। तो किस तरह से माइंड डिस्ट्रक्टिव होने के बाद बॉडी भी डिस्ट्रक्टिव हो रही थी, जैसे कि वेट लॉस हो गया, कफ बिकम वायलेंट, नाइट एग्रेवेशन, वेरी रेस्टलेसनेस, और जैसे माइंड में हर उसके इमोशंस में सिपिलिटिक आ रहा था वैसे उसके बॉडी में हर चीज में सिपिलिटिक आ रहा था। कितना पर्टिकुलर एग्रेवेशन था वो, है ना, एट द एंडिंग ऑफ द मंथ्स के डेज में ही उसे एग्रेवेट होता था लाइक दिस। सो होर्सनेस ऑफ वॉइस इतने अर्ली एज में, तो इस तरह से ये द केस बिकम सिपिलिटिक बाय फिजिकली एंड मेंटली आल्सो। यस यस, और कोई? सर इसमें कॉज जो था बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, यस उसको कंसीडर नहीं किया गया है। यस, सर ने उसे कंसिडर नहीं किया है क्योंकि देखो एलिमेंट्स फ्रॉम वैक्सीनेशन में बहुत लिमिटेड रेमेडीज है। यस सर। और वो हर बार वो रेमेडीज वर्क करेगी कि नहीं करेगी ये बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जाते हैं, उसके जीसीएस के थ्रू जाते हैं, उसमें उसका माइंड, फिजिक्स, जनरल सब कंसिडर करते हैं, और बाद में अगर आप उसे एलिमिनेशन जब रेमेडीज का होगा तब आप उसे कंफर्मेशन के लिए वो रूब्रिक्स अगर आप यूज करते हैं कि एलिमेंट्स फ्रॉम वैक्सीनेशन, तो वो सबसे बेटर रहेगा। फर्स्ट यू गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, genetic traits, his dispositions and his reactions, तो वो सबसे बेटर रहेगा। क्योंकि हैनेमन ने भी यही कहा है कि टेक द टोटलिटी फ्रॉम माइंड, फिजिकल्स एंड जनरल्स। और जब केस क्रॉनिक हो जाती है तो हम मोस्टली एलिमेंट्स फॉर्म को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, राइट? यस। पर सर इसमें 3-4 भी जो वैक्सीनेशन हुए हर बार उसके सपरेशन हुआ है, उसका इफेक्ट हुआ है। यस, तो इसमें कंसिडर नहीं करने चाहिए क्या? कंसिडर करना चाहिए ना। अगर आपको बाकी चीजें नहीं मिल रही तो आप ले सकते हैं ना, लेकिन अगर आपको इतने स्ट्रॉन्ग सिपिलिटिक रूब्रिक्स मिल रहे हैं माइंड से, फिजिकल से, तो आप उसे क्यों देख रहे हैं, राइट? अगर आप उसमें एलिमेंट्स फ्रॉम वैक्सीनेशन डालते हैं तो कोई और ही अलग मेडिसिन आ सकती है उसमें। लेकिन जब आप उसमें डिस्पोजिशंस यूज कर रहे हैं, उसमें पेशेंट के रिएक्शंस डाल रहे हैं, जेनेटिक नेचुरल ट्रेट्स डाल रहे हैं, तो फिर एलिमेंट्स फ्रॉम को ऐसी चीज, ऐसे केस में इंपॉर्टेंस नहीं देना जो पर्टिकुलरली क्रॉनिक केस बन गई। और एलिमेंट्स फ्रॉम इट इज अ जनरल रूब्रिक
ये जनरलिटी में आपको मिलेगा, वहां पे फिर माइंड कवर नहीं होगा। जो हमने सीखा था कि पाइवटल रूब्रिक्स कौन सा होना चाहिए, तो सर ने यहाँ पे पाइवटल रूब्रिक कौन सा लिया, फ्रॉम द माइंड, जो थ्रो एंड थ्रो है, उसके माइंड से भी जा रहा है, उसके बॉडी से भी जा रहा है, उसके जनरल से भी जा रहा है, दैट इज द वायलेंट। सो वायलेंटनेस ये माइंड में भी है, उसकी जनरल्स में भी है, उसके डिजीज पिक्चर में भी है, इसलिए सर ने उसे वहां पे इस सिम्टम्स को इंपॉर्टेंट दिया। यस यस बबलू राव। डॉक्टर सर, यस जो रेस्टलेस स्लीप जो रहते छोटे बच्चों में, नहीं क्या, जी, तो वो अपन ले सकते हैं क्या सर? वो कॉमन भी हो सकता है ना, छोटे बच्चे ड्यूरिंग स्लीप ऐसे गोल गोल घूमते हैं अप टू 3-4 इयर्स तक। तो सर ने उसे यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। ये देखो, ये कॉमन है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है दैट केस। नहीं सर, ये किससे रिलेटेड नहीं है, जो आम जो मैक्सिमम जो बच्चों में दिखते हैं नहीं क्या सर, गोल गोल घूमते हैं जो स्लीप में, नहीं क्या, झोपे में पोजीशन चेंज करते हैं। बराबर है। हाँ, तो वो नींद में तो बहुत से बच्चों में ये होता है सिम्टम कि नींद में वो बेड पे पूरा घूमते रहते हैं। दैट स्लीप इज नॉट अ नॉर्मल स्लीप, दैट स्लीप इज अ रेस्टलेस स्लीप। आप अगर उस केस में अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप ये सिम्टम्स को इंपॉर्टेंट दे सकते हैं, रोलिंग ऑन द बेड। ओके सर। Yes. अभी इसमें अभी जो ये नॉट अ नॉर्मल सिम्टम, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। हर बच्चा ऐसा नहीं करता है। वो इस तरह से सो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसकी स्लीप साउंड स्लीप नहीं है, इट इज रेस्टलेस स्लीप। यस ओके सर। और इसमें जो अभी ऑब्जर्वेटिव रूब्रिक सर ने अभी जो आपने सामने ही दिख रहा था, वो रेस्टलेसनेस ने क्या, ये केस में सर अभी के जी तो वो प्रिस्क्रिप्टिव एज लिए नहीं सर ने? नहीं, सर ने उसे इंपॉर्टेंस नहीं देना। उससे भी ज्यादा स्ट्रांग क्या था, वायलेंटनेस, उससे भी स्ट्रांग है। रेस्टलेस से भी कई गुना आगे का ये प्योर स्ट्रांग सिफिलिटिक रूब्रिक है। ओके सर, थैंक यू सर। और नरेश जी बोलो कुछ। सर, मैंने एक यूएसजी का एक रिपोर्ट भेजा था सर आपको। मुझे वो समझा नहीं था प्रॉपरली। मेरे नंबर पे? हाँ सर। कब भेजा है? 5-7 दिन हो गए सर। ओके, मुझे रिसेंड कर दीजिए वो। यस सर। शायद मेरे देखने में नहीं आया वो, मैं क्योंकि 2-3 दिन में काफी बिजी था, इसलिए देख नहीं पाया होगा। तो आप मुझे रिसेंड करके दीजिए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे दूंगा। जी सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, हरिओम जी, बोलिए। सर, एक दिन आप रूब्रिक को बता रहे थे कि अगर किसी का लड़का एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वहां क्या कहेंगे? बहुत लव्ड वन है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो वहां क्या रूब्रिक लेंगे? ग्रीफ लेंगे, कुछ और लेंगे सर? जो है वो लेंगे ना। तो है क्या सर, यही जानना है ना। तो जैसे एक पेशेंट था सर, तो केस आपको रूब्रिक किसके लेने हैं? फादर के लेने हैं, मदर के लेने हैं, किसके लेने हैं? नहीं, हाँ, जो उसका पिता है, फादर है ना। तो आप ये रूब्रिक वो लीजिए जो आप पेशेंट को पूछेंगे कि जब ये हुआ तब आपको क्या हुआ, आपने क्या किया, राइट? ग्रीफ, बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, है ना, बहुत दुख हुआ, ये सिम्टम्स कभी नहीं लेना। दीज आर इमोशंस। अच्छा। यस, बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ, बहुत रोया, है ना, अच्छा नहीं लगा, दिस इज इमोशंस।
ये हमें नहीं कंसिडर करना है। आपने उस वक्त क्या किया? रिएक्शन। यस, दैट इज द शॉक, ले सकते हैं आप, है ना? अच्छा अच्छा। बहुत एक्सट्रीम ग्रीफ या फिर एक्सट्रीम ग्रीप रूब्रिक तो नहीं है सर ना? हाँ, रूब्रिक एक्सट्रीम ग्रीप करके नहीं है ना? नहीं है, लेकिन ग्रिफ ले सकते हैं, ग्रिफ। लेकिन आपको वो देखना है कि आपको उस वक्त क्या हुआ, आपने क्या किया। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मेरे लड़के का जब इसका हुआ, लक्ष्य का जैसे ही हुआ, तो मैं जैसे हॉस्पिटल पहुंचा, और पहुंचने के बाद मैंने वो डॉक्टर के हाथ में मेरे लड़के को, लक्ष्य को दे दिया। और जैसे मैंने दिया तो मुझे सांस ही नहीं लेते आ रही थी, मुझे बिल्कुल सांस ही नहीं लेके आ रही थी कि मैं इतने जोर जोर से हाफ रहा था, एयर अंदर जा ही नहीं रही थी। फिर मैं जमीन पे गिर गया और ऐसे बिल्कुल इधर से उधर रेस्टलेस हो रहा था कि मेरे को हवा दो। तो ये क्या था, आप लोग एनालिसिस करो। उसके बाद ये हुआ तो वो लोग भागते आए, बीपी देखा, ये देखा, थोड़ा सा मुझे चेस्ट पे मसाज किया और थोड़ा सा सीपीआर टाइप किया उन्होंने। फिर थोड़ा सा मेरे को फिर भी मेरे को सांस नहीं लेते आ रही थी। फिर बाद में मेरे को थोड़ा याद भी नहीं आ रहा है एक्चुअली क्या क्या हुआ, तो क्योंकि वो कंडीशन बहुत डेंजर थी मेरे लिए। मुझे, हाँ, बाद में मुझे इतनी इतनी ठंडी जोर से भर के आई कि मैं बिल्कुल ऐसे जोर जोर से कांप रहा था। बेड पे सुलाया तो मैं बिल्कुल ऐसे थाड़ थाड़ उड़ रहा था, इतने जोर से चिल्स आए। उसके बाद मेरे को मोशन आई। जब मोशन आई तो एक्चुअली मैं वो कमोड पे बैठ भी नहीं पा रहा था, इतना जोर जोर से हिल रहा था। तो ये क्या था, आप लोग बताओ मुझे। सर शॉक। यस, सडन शॉक। शॉक, हाँ, पैनिक भी हो सकता है। सडन शॉक था ये, पैनिक हो गया था, है ना? शिवरिंग, शडरिंग था इतना जोर जोर से, और एस्फिक्सिया टाइप हो रहा था। मुझे सांस ही नहीं आ रही थी, सांस ही लेते नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस अब हार्ट फेल होता, रेस्पिरेटरी, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता, इतना ये था वो। तो मतलब वो कमोड पे बैठा तो वो कमोड भी ऐसा हिल रहा था, इतने जोर जोर से मुझे वो शिवरिंग शडरिंग हो रहा था। मैं मतलब वॉश भी नहीं कर पाया, किसने किया ये भी पता नहीं था मुझे, वॉश किसने कर दिया ये भी पता नहीं था। तो दिस इज शॉक, दैट इज रियल शॉक। तो ये रिएक्शन पूछना है हमें कि जैसे आपको पता चला, आपको क्या हुआ, आपने क्या किया। मैं लिटरली मैं वो फ्लोर पे, वो हॉस्पिटल के फ्लोर पे वेटिंग रूम में गिर गया, और इधर से उधर मेरे को, क्योंकि एयर ही अंदर नहीं जा रही थी, तो आप समझ सकते कि अगर एयर ही नहीं मिल रही तो क्या कंडीशन होगी, लाइक दिस। तो ये डिस्पोजिशन, ये रिएक्शन उस टाइम की हमें लेनी पड़ती है। ये कब, जब एक्यूट केस है। लेकिन वही अगर क्रॉनिक केस बन जाती है तो फिर आपको डिस्पोजिशन थ्रो एंड थ्रू, जो नेचुरल ट्रेट्स है, जो थ्रो एंड थ्रो दिख रहे हैं, जैसे कि माइंड में भी दिख रहे हैं, फिजिकल में भी दिख रहे हैं, जनरल्स में दिख रहे हैं, वो पिकअप करना है इन क्रॉनिक केसेस। अनम्यूट कीजिए, हरिओम जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो, बोलिए। हाँ सर, अभी जो बोले हैं कि हमको फिजिकल जर्नल में लेना है, वो मेरे को नेट सही नहीं था ना, सुनाई नहीं दिया मेरा। अभी आप बोले ना कुछ लेना है हमको फिजिकल में, जर्नल में, जो क्रॉनिक केस होता है उसमें ही लेना चाहिए। जो पाइवटल रूब्रिक होता है, जो मेन रूब्रिक होता है, जिसे हम थ्रो एंड थ्रो बोलते हैं, नेचुरल ट्रेट बोलते हैं, अनडिजीज्ड सिम्टम, नॉन डिजीज सिम्टम बोलते हैं, वो रूब्रिक जो होता है, थ्रो एंड थ्रो का मतलब है कि आपको माइंड में भी देखना है, फिजिकल में भी देखना है और जनरल में भी देखना है।
तो वो रूब्रिक तो नहीं मिलेगा। जैसे कि अब सर ने यहाँ पे वायलेंट ये रूब्रिक लिया, ये रूब्रिक सर ने कन्वर्ट किया कि हर कंडीशन उसकी कैसी थी, डेंजर थी, वायलेंट थी, सडन थी, फास्ट थी। तो ये माइंड में भी उसका वही था, फिजिकल में भी वही था, जनरल में, इसलिए सर ने वो वायलेंटनेस उसका रूब्रिक लिया जो थ्रो एंड थ्रो है। तो आपको वो चीज समझ के उसको रूब्रिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। यस। हाँ सर, सबसे टफ तो यही है, इसी में हम लोग फंसते ज्यादा है। इसका भी क्लास होगा ना सर? लेंगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ हमें सीखना है। जो मैं सीख रहा हूं अभी, ये जो मेरा रीडिंग शुरू है, उसमें से तो कुछ मतलब बहुत ही ऐसे वंडरफुल स्ट्रेंज चीजें सामने आ रही है कि हैनीमन की इतनी फोरसाइट कैसे हो सकती है। तो वो सब मैं उसके लिए, हमारा प्रोग्रामिंग चालू है, हम उसका बहुत ही अच्छी तरह से आपके सामने उसे लाएंगे और एक नया साइंस होम्योपैथी आपके सामने आ जाएगा, प्योर हैनीमनियन होम्योपैथी। अच्छा, उस पर वर्क चालू है। बहुत जल्दी हम ये नया एक क्लास शुरू करेंगे। जिसको उसमें ज्वाइन होना है आप लोग हो सकते हैं, और वो नाइट में सोच रहे हैं कि उसे नाइट में रखें, 8 से 9 या फिर 9 वही से 9 10। साढ़े 9। देखते हैं आप कैसा। हेलो हाँ बोलिए सर। हेलो जी, बोलिए। सर, आप लोग तो बहुत पुराने प्रैक्टिशनर है, जी नए हैं कहीं के पे। जी जैसे आपने उस दिन आप एक क्लास ले रहे थे, उसमें आप बताए थे ग्रेजुएशन होता है, मतलब जो सिम्टम रिटर्न आते हैं वो 6 दिन, 8 दिन और 10वें दिन पे सेंटिसिमल पोटेंसी से जो एग्रेवेशन आता है, मतलब राइट रेमेडी पढ़ने के बाद एग्रेवेशन जब आता है 6वें, 8वें, 10वें पे, और 50 मिली स्मेल का आता है, जब दवाई बीमारी ठीक है तब उसका प्रूविंग होता है, तब आता है। तो मैंने एक पेशेंट को लंबर स्पॉन्डिलोसिस का केस था, और मैंने दवा दी, जस्ट 6वें दिन उसका लंबर पेन आया। वो 2 साल में 5 बार दर्द हुआ था उसको, बहुत सीवियर दर्द था, बहुत फर्क था, वो खड़ा नहीं हो रहा था। उसको जब आया दर्द ना, तो वो खड़ा हो सका, अपना थोड़ा कर सका, मसाला साथ करवाया, घर में मुंह लगाया, वो था, लेकिन पहले से 50% कम था। वो मेरे पास एक 7वें दिन आया, उसको सब कुछ अच्छा, और उसका भूख बढ़िया हो गया था, स्टेंट अच्छा था, लेकिन 6 डे ना उसको दर्द हो गया था कमर में। तो वो DHMS में बने रहे, तो मैंने बताया कि बहुत अच्छा है सर, दवा बहुत बढ़िया काम किया है आपका। देखिए जो दर्द था ना, दवाई की वजह से ही आया है, लेकिन जो दर्द पहले ज्यादा होता था वो कम हुआ है, अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर आएगा नहीं। आपका अगर ज्यादा टेंशन हो तो आप एक MRI करा सकते हो या एक्सरे करा सकते हो। बोला ठीक है, लेकिन उसके बाद वो पेशेंट आया नहीं। मैंने उसको कहा, बैक भी किया जानने के लिए कि क्यों नहीं आ रहा है, तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार, दवाई सही देने पर पेशेंट को तो खुश होना चाहिए। वो मैं उसको सही चीज सलाह दे रहा हूँ, और जहाँ जैसे दर्द था ना, सेम वही आया था। उसका स्टेन, भूख, वो सब मैंने पूछा था तो वो सब सही था, और दर्द भी 50% पहली बार से कम आया था, लेकिन पता नहीं क्यों आया नहीं। जैसे आ आप जाएगा, लोग कहते हैं अगर मैं आ जाएगा, कि अगर दवाई सही है, आएगा, जब दवाई बिल्कुल सही आएगा, रहेगी, बिल्कुल आएगा। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आया नहीं? आएगा ना। हो सकता है उसको कुछ काम निकल गया, उसका कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, दूसरा फैमिली कोई प्रॉब्लम। वो मेरे क्लिनिक के ही रास्ते से आता जाता है, मेरे क्लिनिक के ही रास्ते से जाता है। उसको ड्यूटी करना है HDFC बैंक में, मेरे ही सामने से जाएगा, तो कोई रास्ता नहीं है। तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ कि अरे सही दवाई है, उसके बाद भी इतना समझा रहा हूँ, एजुकेटेड लोग है, फिर भी ऐसा है। जो अनपढ़ होता है अलग बात है। तो इसमें क्या है, हम लोग थोड़ा सा वीक विल वाले हैं, फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं हम लोग। क्या मैं बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आएगा, जरूर आएगा। आप हम लोग क्यों निगेटिव सोचे उसके बारे में? आएगा ना, उसको जब आने का बिल्कुल जरूर आएगा। उसको अगर 100% रिलीफ होगा तो वो अभी क्यों आएगा, बाद में आएगा। अच्छा अच्छा, यस, हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। यस, ओके, थैंक यू। सो
मैं सोच रहा था कि कल ये प्रूफ ऑफ सिमिलियम लेने के पहले एक केस दिखा दूं, तो हम कल एक सोच रहा मैं एक कल केस दिखाने का, तो देखता मैं कल मैसेज डाल दूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल हम वापस फिर से मिलेंगे। ओके सर। दोपहर 4 बजे। ओके, सो थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।